the last class, I discussed watchdog timers, interfacing of SPI based ADC and DAC. Okay. So today I am going to discuss the PCA timer. This is also one type of timer. Like watchdog timer is also there, PCA timer is also there, general timers is also there. Okay. So the PCA timers indicates that programmable counter array timer. PCA indicates programmable counter array timers. So this timer is having different modes like capture mode, PWM generation mode, high speed output toggle mode, watchdog timer mode. Okay, so there are different modes. Totally 5 modes are there. What are different 5 modes? Different working is there. So with the help of programs, you have to decide in which mode you want to work out with this PCA timers. Okay, so there are variety of roles are there. So first we will see the PCA timer. What is the PCA timers? Then after PCA timers, I will discuss PCA timers in a capture mode, PCA timers in a PWM generation mode, PCA timer in a high speed output toggle mode. So capture modes means you have to take the capturing the inputs. Okay. At the time, let us consider you want to take the input at 10 o'clock, at 12 o'clock, at 14 o'clock, okay, at 16 o'clock. Okay. So in this way, what you will do? You have to set the timing so that at the particular time, it will capture the input. Okay. And second is PWM generation mode. All of you studied pulse width modulations in a communication. So pulse width modulations, you can vary the width of the pulse, clock pulses. Like it comes as a duty cycles, 30% duty cycle, 40% duty cycle, 50% duty cycles. You can generate this type of wave also. So high speed output toggles mode. In high speed also you can work with this timer. Okay, fine. So let's start with the PCA timers mode. PCA timers. So the PCA timers, the name suggests it is programmable. So you can program to work in any types of modes. I told you it works in a 5 different modes. That is also called as 5 different modules. Counter array. Okay. So it provides more timing capabilities with less CPU intervention than standard timer. See, the standard timer is also available in every microcontroller. Timer is present, timer is there. But why it is needed programmable counter array? So it has more timing capabilities. It means that it will do job accurately. And also, if you will do the job, then the CPU intervention will be very less. Now you can think this PCA timer is external timer. So it is communicated with the externally with the CPU. So it will not intervene CPU more. Now जो भी स्टैंडर्ड टाइमर्स है या काउंटर्स है वो क्या होता है कंट्रोलर्स के ऊपर ही इनबिल्ट होता है. ठीक है, तो उसके अंदर के आर्किटेक्चर्स में ही अवेलेबल होता है. तो इट विल अफेक्ट मोर rather than PCA timers. So the main advantage is
It includes reduced software overhead and improved accuracy. The accuracy is more, and it will be reduce the software overhead. Software overhead means, let us consider one CPU is there, one microcontroller is there. In one microcontroller, in one case, you have put a timer from the outside, and one case, the timer is inbuilt on that. So if timer is inbuilt that, it's easy to write the programs. Okay, but एक्चुअली वो मॉड्यूल्स उसके अंदर होता है, तो उसको क्या करेगा, जो भी बसेज होती है डेटा, हम क्या करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बसेस, डेटा बस एंड एड्रेस बस. इसी दो बसेस के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं. तो उसके लिए क्या होगा, जब सीपीयू यूज करता है उसी डेटा बस और एड्रेस बस का, और एट द सेम टाइम टाइमर भी यूज करेगा उसी डेटा बस और एड्रेस बस को, तो सेम बसेज होती है जिससे हम डेटा सेंड कर सकते हैं. लेकिन जब हम एक्सटर्नल लगाते हैं, तो एक्सटर्नल्स में क्या होता है कि इनपुट्स को हम क्या करते हैं, उसकी जो बसेस होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, तो उससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है सीपीयू को. तो एंड इससे सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट कम पड़ती है. ठीक है, द पीसीयू consists of a dedicated timer which serves as the time base for any array of 5 capture compare modules. Now you can see that this PCA is working in a 5 capture and compare and capture modules. I will discuss which type of modules is there. It indicates module 0 to module 4. Module 0, module 1, module 2, module 3, module 4. Okay, but I will discuss in the block diagram. So now it serves as the time base for an array. Now time base, what is time base? Actually the time base is a time period which is used as a base measurements of a base measurements. So you can measure the base, like if you are using the systems, processors, controllers, then the frequency is fixed. You are not have a permission to change the frequency. You can't able to do that. So that is called time base. अगर कोई भी हम सॉफ्टवेयर, कोई भी हम प्रोसेसर या कंट्रोलर डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी पहले से फिक्स करते हैं. दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक साइकिल्स. एक क्लॉक साइकिल्स में एक क्लॉक्स हो गए, वो कितने सेकंड्स का होगा, कितने देर का होगा. ठीक है, इंटरवल उसकी कितना होगा. विद दैट इंटरवल, उस एक क्लॉक के अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिट्स. दैट रिप्रेजेंट्स द हाउ मेनी बिट ऑफ द, कितने बिट का है ये प्रोसेसर और कितने बिट का है कंट्रोलर. ठीक है, वही सेम क्लॉक जो होता है फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है. तो हम क्या करते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, क्लॉक की साइज हमें रिड्यूस करनी पड़ती है. ठीक है, तो उसके लिए हम टाइम बेस हम खुद डिसाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, at the time of designing. Okay, so now you can see the block diagram of the PCA. The block diagram of PCA, what will happen? Now this is a PCA time counter, timer counter. So PCA timer counter is of 16 bit, but what about 8051? This is of 8 bit. So this timer is not used simultaneously. तो हम इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, CH और CL, काउंटर हायर बाइट और काउंटर लोअर बाइट, 8 bit this and 8 bit this. So this is a 16 bits PCA timer counters, and there are 5 modules. I already discussed the modules 0, modules 1, module 2, module 3 and module 4. These different 5 modules. Each module has a 16 bit each, since it is a 16 bit timer counter. Okay, so 16 bit each modules will be there. Now different module have a different applications. If you want to use module 0, you can use it. If you want to use module 1, you can use it. If you want to use any modules, you can use it. No problem in that.
Okay, so this is called, these five modules is called capture and compare modules. Capture and compare modules 0, capture and compare modules 1, capture and compare modules 2, capture and compare modules 3, capture and compare modules 4. Okay, so these five different modules having different applications. Now for each modules there are 5 modules, so you have to connect this module with the controllers. So you require 5 different pins. So for that purpose, we are using P1.3, P1.4, P1.5, P1.6, P1.7. When I am going to discuss that, when I am talking about that, I think I told you in SPI port, if I am talking 4 SPI ports, then you have some pins. Let us see once so that you can get the idea. See here, this is a 89LP51RD2. In this RD2, you can see CX0, CX1, okay, CX2, CX3, CX4. There are totally 5 pins in there. So these 5 pins 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. So these 5 pins is dedicated for the modules 0, modules 1, module 2, module 3, modules 4. So you have to connect with this pin only. Okay, so that's why we are going to connect these modules P1.3, P1.4, P1.5, P1.6, P1.7. So this is dedicated as CEX0, CEX1, CEX2, CEX3 and CEX4. So CEX means this is a capture and compare external input output for PCA module. Like if we are taking CX0, it means that capture compare external input output for PCA module 0. If you are talking CX1, it means that capture compare external input output for PCA module 1. So you have to remember CX indicates capture and compare modules for external input output. Since these modules you have to connect, this is a timer. So these timers you have to connect with this timer with the microcontroller. So if you are connecting this timer with the microcontroller, you have to interface these or 5 modules. That is P1.3, P1.4, P1.5, P1.6, and P1.7. Okay, so now these modules, there are several working modes in these modules. Let us, you can check that. External events associated with these modules are shared with the corresponding port 1 pins. You have to connect port 1 pin only, remember that. Each 5 modules can be programmed in any of the following modes. Sorry. So all 5 modules you can connect, you can program in any way, but remember only module 4 can be used as a watchdog timer mode. There is no module 0, module 1, module 2 and module 3 will work as a watchdog timer mode. Rest of 4, rising or falling edge capture, software timer, high speed output, first bit modulator. So these 4 you can program in any modules. Okay, even watchdog timer also. But module 4 is used. Watchdog timer will work only in module 4. Remember that. बाकी हम पांचों को किसी भी मॉड्यूल्स में यूज कर सकते हैं, सॉरी चारों को, लेकिन watchdog टाइमर्स जो होगा सिर्फ मॉड्यूल 4 में काम करेगा.
So this is depends upon you. How can you able to write a program? आपको जिस भी मोड्स में काम करानी है आप उस मोड्स में प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. Okay. So now this is the basic information about PCA timers. It is a free running 16-bit timer consisting of registers CH and CL, the high byte and low bytes of the count values. Okay. So what will happen? I will told you the microcontroller is of 8-bit, but this PCA timer is having 16-bit. So we are going to divide in two different registers, that is called CH and CL, that is high bytes of count values and low values of count value. See, PCA timer और counter करता क्या है? Actually he is counting. अगर मान लो कि मैंने सेट किया है कि 8 o'clock पे ये काम करेगा, 8 o'clock पे पल्स देगा, ठीक है? तो 8 o'clock पे पल्स कब देता है? हम क्या करते हैं, जब मान लो कि हम 7 o'clock पे सेट किया, ठीक है, प्रोग्राम लिख दिया मैंने, रन करा दिया, तो 7 o'clock पे मैंने प्रोग्राम लिख दिया, 8 o'clock पे मुझे इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, ठीक है? देन व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू इंक्रीमेंट दिस वैल्यू, ठीक है? एक बार इंक्रीमेंट करेगा तो क्या होगा, 7:01, उसके बाद कंपेयर करेगा 8 से, अच्छा 8 के बराबर नहीं है, तो फिर क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा 7:02, 7:03. Every time he will increment and he will compare with this value, targeted value, or you can say fixed value. So whenever these are equal, it will capture the input. Okay, so you can understand like this. So this value is stored in the CH and CL registers, remember. And also the PCA timer is a common time base for all 5 modules. See, different types of you can use these modules in a different types of frequency. Like what will happen? It can be programmed to run at 1/12 the oscillator frequency. See, if controller is there, frequency of this controller is fixed. Controller is frequency will fixed. If controller will frequency will fixed, what you will do? You have options. There are 3 or 4 options are there. You can use any options. If you want to write a programs which works as a 1/12 the oscillator frequency, no problem, you can program it, it will work. 1/4 the oscillator frequency, it's fine. Timer 0 overflows or input on the ECI pins P1.2. So ये there are 4 options are available. So आप किसी में भी प्रोग्राम करा सकते हैं, किसी में भी रन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखनी पड़ेगी. यू हैव टू डिसाइड इट. जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि 1/12 ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पे काम करे. इसका मतलब क्या होता है कि अगर पीसीए टाइमर की फ्रीक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज, अगर हम उसको 1/12 कर देंगे तो क्या होगा? इफ यू आर डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी, इट मींस डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी मींस क्या? फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज कर रहे हैं. अगर इफ यू आर डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इट मींस you are increasing the time period. If you are increasing the time period, it means that execution time will be very less. So this will be beneficial. So now this timer and counter source is determined for the CPS1 and CPS0 bits. Now how can you decide that you have to use 1/12 the oscillator frequency, 1/4 the oscillator frequency, timer 0 overflows or the input on the ECI pin? तो ये 4 ऑप्शंस में से इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो दिस इज सेलेक्टेड टू द विद द CPS pin. CPS pin it's called count pulse select bit. CPS count pulse select bit. So with the help of this bit, you have to select these 4 options. Okay, since CPS1 and CPS0 0, there are 2 bits are there. The combination of 2 bits is 4, 0 0 0 1 1 0 1 1.
So in that 4 different options, you have to select 4 different things. And what about the CPS1 and CPS0 bits are there? This bits is available in the CMOD SFR registers. See that. माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी हम काम कराते हैं, कोई भी कुछ भी करना हो, उसके लिए क्या होता है, हमेशा एक रजिस्टर अवेलेबल होता है. जैसे मान लो टाइमर्स यूज कर रहे हैं, तो टाइमर के लिए एक रजिस्टर होगा, क्योंकि अगर टाइमर्स की हम वैल्यू फिक्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे. दैट फंक्शन विल बी स्टोर्ड इन द सम रजिस्टर्स. सो सेम वे इट इज CMOD SFR. CMOD indicates capture mode register and SFR indicate a special function registers. Every microcontrollers having 2 types of registers. One is general purpose registers and another is a special function registers. So what is the difference between these two? General purpose registers is used for a general purpose. Like if you want to do some operation, and at that operation you want to store the data somewhere else, so you cannot able to store the data in SFR. You can only store the data in a general purpose register. So general purpose registers को हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है. लेकिन SFR रजिस्टर्स जो होती है इसकी फंक्शंस अलग है. इसकी स्पेशल, दिस इज कॉल्ड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. द रजिस्टर विच इज हैव डेडिकेटेड फंक्शंस, वी कैन नॉट चेंज इट. ठीक है, जैसे टी मोड तुम लोग को पढ़ा होगा, टी मोड रजिस्टर इन केस ऑफ 8051, तो वो सिर्फ क्या करेगा, दिस रजिस्टर इंडिकेट्स ओनली यू हैव टू सेट द टाइमर. ऐसा नहीं है कि इसको हम किसी और रजिस्टर्स में यूज कर लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल. तो सेम वे दिस टाइमर एंड काउंटर इज डिटरमाइंड कि आपको कौन सी सोर्स सेलेक्ट करनी है. 1/12 ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, 1/4 ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, टाइमर 0 ओवरफ्लो सेलेक्ट करनी है, या इनपुट ऑन ECI पिन सेलेक्ट करनी है. तो दिस विल डिसाइडेड बाय द CPS1 एंड CPS0 बिट. एंड दिस CPS1 एंड CPS0 बिट कहां रहता है, ये CMOD रजिस्टर्स में रहता है, जो कि एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है. Okay, so now we will see the CFSR registers. Now here see, the first column CPS1 bit is there and CPS0 bit is there. So CPS1 and CPS0 bit will decide you want to work in which mode or in which oscillator frequency. Now the first I have talked is the 12 clock mode and one is 6 clock mode. Just it is half of that. Okay, you can use 2 clock modes, either 12 clock modes or 6 clock modes. Let us, if CPS1 bit and CPS0 bit is 00, then in case of 12 clock mode you can divide by 12. In 6 clock mode you can divide by the 6. जो भी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे और 6 क्लॉक मोड में 6 से डिवाइड करेंगे. So if you are selecting, let us, I will discuss this first one only. Okay, so first if you are selecting 01, then it is divided by 4. When you are selecting 10, it means timer 0 overflow, and it is selected, sorry, it's 11, then it is called external clock, that is maximum rate oscillator frequency divided by 8. So this is the option. In these options you have to select anyone, no problem in that. Then what criteria is available for selecting these frequencies? अब ये देखो कि आपको काम करानी है तो कितनी जल्दी करानी है. ठीक है, यहां पे जो भी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है उस ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड कर रहे हैं. अगर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी हम उसको कम कर रहे हैं. इफ यू आर डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल हैपन, द टाइम इज इंक्रीजेस. इफ टाइम इज इंक्रीजेस, इट मींस दैट द एग्जीक्यूशन स्पीड इज फास्ट. On the same way, you are talking about the 6 clock mode. If it is 00, then you can divide by 6. If it is 01, then divide by 2. If it is 10, it is timer 0 overflow. And if it is 11, divide by 4.
So mainly there are three options will be there. Either divide by 2, divide by 4 or divide by 6. In this case, either divide by 4, divide by 8 and divide by 12. So in these three, you can select any one. Now the main is timer zero overflow. This is a conditions. In that conditions, when the timer will overflow means it will exceed the limit. If timer flow is 16 bit, then the maximum value of timer is 4 times f. Okay. After that, if you will increase once, what will happen? It will becomes, in this FFF, if you will add 1, what will happen? This will be reach 0, 0, 0, 0, 0, 1. So this one is called carry bit. So now you can see I talked to you about the CMOD registers, CMOD SFL register. In the C, this CMOD register is of 8 bit, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. So this is a 8 bit register. This is called PCA timer counter mode register 1. Now this is having some special functions and dedicated functions. Like you can see, I told you CPS1 and CPS0 bit is here. So with the help of these bits, you can select the clocks. That's why it is written CPS1 PCA count pulse select bit 1 and CPS0 PCA count pulse select bit 2. So with the help of these two bits, you can select a source. Okay. Now, to come to the 8th bit, that is CIDL. CIDL is called counter ideal control. So what is the counter ideal control bit will do? If it is 0, it means that it programs the PCA counter to continue functions during ideal mode. Okay. जनरली क्या होता है? जनरली आइडियल मोड में कोई भी सिस्टम्स काम नहीं करता है. ठीक है. तो आइडियल मोड्स में क्या होता है? आइडियल मोड्स में लेकिन यहां पे क्या है कि आइडियल मोड में भी ये काउंटर्स काम करेगा, ये रनिंग पोजीशंस पे रहेगा इफ यू प्रोवाइड CIDL bit is 0 and if you will provide it is 1, then the programs the PCA counter to be get off during ideal. तो CIDL bit अगर 1 होगा तो क्या होगा? You can select the ideal mode में ये काउंटर स्विच ऑफ मोड में रहेगा और अगर 0 है तो ये हमेशा काम करता रहेगा. In same case, what about the 7th bit is WTTE, that is called watchdog timer enable. If it is 0, it means that you are disabling the watchdog timer, and if it is 1, it is enabling the watchdog timer. Now, but disabling and enabling watchdog timer function is working in module 4. Already I told you the module 4 only supports the watchdog timers functions. So when we are discussing the module 4, then if you are writing the programs for module 4, then you have to decide the watchdog timers enable bit. अगर मान लो कि मॉडल 3 की हम बात कर रहे हैं तो मॉडल 3 में WTE bit कुछ भी हो, I don't bother about that. Since model 3 it does not support the watchdog timer functions. Okay, so in this way you can. The next is a ECF bit. So now see, CPS1 and CPS bit already told you in the previous slides. See, if it is 0, 0, then it is divided by 6 in a 6 clock mode and divided by 12 in 12 clock mode. If it is 0, 1, then FS6 oscillator divided by 2 in a 6 clock mode and 4 divided by 12 clock mode. 1, 0, it is 0, the timer 0 overflow. 1, 1, it is a external clock at ECI pin. Now this is also called as module 0, module 1, module 2 or mode 3, or you can say mode 1, mode 2, mode 0, mode 1, mode 2, mode 3. Okay.
So this is the function of CPS1 and CPS0 bit. Now the one bit is left, that is called ECF bit. So this ECF bit indicates enable counter overflow bit interrupt. So it is a PCA enable counter overflow interrupt. What will happen if you are counting something? तो जैसे मान लो कि हम काउंट कर रहे हैं और काउंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर 8 बिट की बात करते हैं तो काउंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 FF है. अगर हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एक समय आएगा कि ये वैल्यू रीच करेगा. जैसे ही ये वैल्यू रीच करेगा, इससे हम जैसे भी इंक्रीज करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 0 0. सो इस केस में 1 क्या होगा, ये इंडिकेट करता है क्या, विद द हेल्प ऑफ कैरी बिट इज इंडिकेटेड एज ए इंटरप्ट, और ये इंटरप्ट बताता है कि ओ इट्स एक्सीडिंग द लिमिट्स. इसी से हम कंपेयर करते हैं, कैप्चर करते हैं. जैसे मान लो हमें कैप्चर करना है, जैसे मान लो पहले बताया कि 7 बजे अगर हमें कोई भी इनपुट लेनी है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि 7 बज कब रहा है. कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो वो क्या करता है कि हर एक बिट में एक इंक्रीमेंट करता है और फिर क्या करता है, कंपेयर करता है उस वैल्यू से. तो if CF bit is 0, it means that you are disabling the CF bit on CC-con register. If it is 1, it enables the CF bit in CC-con to generate an interrupt. Now, CC-con is also one SFR, special function registers. I will discuss in the next class what is CCN, what is CC-con registers.